points such as basic functions of communication, example of communication skills, what are the objective of communication. Any doubt? Any points you want me to repeat? No, na? Can I proceed further? Yes, sir. Okay. The next one is what are the 7 C's of communication. मैंने 7 C's of communication discuss किया है, आपको लिखवाया है. Completeness, नहीं correctness, courtesy. प्लीज नहीं सर, बस थोड़ा सा आपने लिख पूरा लीजिए. क्लियर। हाँ सर। प्लीज थोड़ा सा लिख लीजिए. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. What are the 7 C's of communication? Write it down. If you have a pen and paper with you, write it down. This one is very important. What are the 7 C's of communication? C stand for cat. Are you writing? यस सर। Okay, your voice is not clear to me. Your voice is not audible to me. आपका स्पीकर थोड़ा सा डाउन हो गया, मतलब लो हो गया. थोड़ा सा स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए. क्योंकि यहां से ठीक है. व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. आप अगर सुन पा रहे हो तो लिखिए. और ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है, व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन. बोथ द वे द क्वेश्चंस में कम. व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन और व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, थैंक यू. मधुस्मिता, ये तुमने कहां से लिखा है, थोड़ा सा हमको बता सकती हो? That so that I can also write something else if you have some any problem. मेरे ये फंक्शन है नहीं शायद. Share the screen, report problem settings. In call message, okay, just a minute. Will in call message activities, in call message, don't know, क्योंकि यहाँ इन कॉल मैसेज तो कुछ आ नहीं रहा है. अच्छा, इन कॉल मैसेज. ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू. Okay, now just see what are the 7 C's of communication. 7 C's of communication. What are the, or what are the principles of communication? What are the principles of communication? Okay. Now, number one is completeness. Number one is completeness. Number two is correctness, concreteness. Concreteness. Number third is courtesy. Number three is courtesy. Number four is correctness. Number four is correctness. Number five is clarity. Number five is clarity. Number six is consideration. Consideration. And number seven is conciseness. Conciseness.
So these are the 7 C's of communication. Okay, just note it down. These are the important, very important part of communication. Okay, okay. Have you write it? Have you complete it? Yes, sir. Okay. Now, just I need to explain these things. These are the 7 important principles of communication or 7 C's of communication. Number 1 is completeness. In communication, these are the 7 rules. If you follow these seven rules or 7 principles of communication, then you can be a very good speaker. Number 1 is whenever you are communicating to any person, just try to give complete information. This is the first priority. Okay, whatever the information you are sharing or whatever the information you are giving to the next person, you must be very much precautions. You must be very much precautious that whatever the informations I or you will going to share, it should have complete information. Next one is concreteness. The same thing again, whatever or whichever the messages while writing or while communicating your messages to somebody else, the informations should be, must be concrete. Concrete means solid evidence, solid informations. ऐसा नहीं है कि यहाँ की बात वहां से, वहां का कुछ बात यहां से लेके फिर बोलना, फिर आपका जो कम्युनिकेशन हो वो बैरियर क्रिएट कर देगा. देयर विल बी अ बैरियर इन द कम्युनिकेशन और आप अपना जो सेल्स है वो आप क्लोज नहीं कर पाओगे. यू विल नेवर गोइंग टू क्लोज द सेल्स. व्हाई? बिकॉज वट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर शेयरिंग इज नॉट concrete. You are not giving full, perfect, correct information. So concrete means solid information. आपको जितना मालूम है उतना ही इंफॉर्मेशन दीजिए, वो सॉलिड इंफॉर्मेशन में गिना जाएगा. दूसरा होता है, थर्ड होता है courtesy. The meaning of courtesy is very polite. Whenever you are communicating with someone else, you need to be very much polite. मैंने कहा था ना आपको कि you need to be very much polite towards while you are delivering your communication. The next one is the same thing. Whatever information you are sharing, it should have correct information आपको देना चाहिए. False information कभी शेयर नहीं करना चाहिए. अगर कस्टमर को पता चल जाता है, if customer know that you are giving him or her false information, the customer will never ever going to turn up for the next time. Okay, that's why whatever information you are sharing, it should have correct information. Then the clarity means your tone, voice tone. Your voice tone must be very good. You should have a toned voice. Every pronunciations should be correct. Okay, then only you will going to communicate further. Then clarity. Oh, I have already told you the clarity. Considerations means with a full confidence. With full confidence, you must deliver the communication. Without making any hesitations, you need to deliver your communication with full confidence. Then only the person's other will going to listen you very clearly and very minutely. And the last one is very conciseness. Conciseness means you must be very much attentive. Whenever you are communicating with someone else, you must be very much attentive. And the same vice versa. Whenever you are listening to somebody else, you must be very much concise while doing communication. So these are the 7 principles of communication. If you need to follow this, then you can be a very good speaker. Is it clear, Madhusmita? Yes, sir. Any points? Any points you want me to repeat? Any points you want me to repeat? These are the very important for from your job perspectives. These points are very, very important. Okay. कस्टमर को ना हेजी वॉइस अच्छा नहीं लगता, कस्टमर को लो वॉइस अच्छा नहीं लगता.
कस्टमर को जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अगर परफेक्ट नहीं हो तो कस्टमर सुनना नहीं चाहते हैं। आपका वॉइस में अगर क्लैरिटी नहीं है तो मीन्स कुछ डेकोरेटिव, सुंदर, आपका वॉइस अगर क्लियर अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट ले लो, देखिएगा अमिताभ बच्चन का वॉइस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड वॉइस हो गया है। कोई भी सर्वर या कोई भी आपको मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको शेयर करना है तो अमिताभ बच्चन को लिया जाता है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज ही हैज अ वेरी गुड वॉइस, he has a very good pronunciation, his communication skill is excellent, and he has a very good tone and clarity while doing communication. So these are the important parts, or these are the important principles of communication. And for that reason, if for any government projects, for any government project, maybe whether it is in corona information sharing with the normal people, or about the insurance, about the RBI guidelines, जो भी important एस्पेक्टिव्स होता है, देखिए वो अमिताभ बच्चन से ही डबिंग या रिकॉर्डिंग्स करवाया जाता है। व्हाई? बिकॉज ही हैज अ वेरी गुड toned voice, he has a very good communication skill, he has a concrete idea, he has a full consideration and full conciseness when while doing communication। आप जब भी उनको देखिएगा कुछ स्पीच वॉइस या फिर कुछ भी वो कम्युनिकेट करता होगा, look at his confidence। lot of good actors are there, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शाहरुख खान, आमिर खान या फिर सलमान खान, but they are not getting so much as Amitabh Bachchan is getting. Why? Attention. Why? Because of his communication skill. Are you getting, Madhusmita, my points? Hello. Yes, sir. Okay. Getting it. Any points? कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर, सब ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मतलब तुमको समझ में आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। Now, the next question is, what are the types of communication? Just check, what are the types of communication? What are the types of communication? What are the types of communication? Just message aa raha hai na? I'm sharing the message with you. You are Yes, getting my sir. message? Yes, sir. Okay, just okay. The what are the types of the types of communication? First one is written communication. This one is very important. Written communication. Written communication. Written communication. In written communications, lot of bifurcations are there. Lot of sub contents are there. What are they? Number one is, just check, under written communication, lot of contents, other contents are there. What are they? Number one is, suppose memos. Memos का full form होता है memorandum. Okay, this is number A. This one is number B, that is bulletins, जो कि एक्चुअली न्यूज में यूज होता है। बुलेटिन्स, बुलेटिन्स का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट जो इन मैसेज होता है सिर्फ आउटलाइन बता दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बुलेटिन्स। द नेक्स्ट वन इज, द थर्ड वन इज जॉब डिस्क्रिप्शन। द थर्ड वन इज जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन। देन ईमेल राइटिंग, सॉरी बी के बाद सी होगा, मैंने 3 लिख दिया है, आई एम सॉरी। B के बाद that is C. The D1 is email writing. Email writing. Email writing. Okay. The next one is आपका है एम्प्लॉय मैनुअल। इसका मतलब एम्प्लॉय का मैनुअल होता है CV और रेज्यूमे राइटिंग। CV और रेज्यूमे, रेज्यूमे और ऑब्लिक एम्प्लॉय मैनुअल, एम्प्लॉय मैनुअल। This is number this is, you can say, number D. This is number E. And the last one is instant messages. Instant messages. So these all sub contents
falls under written communication. Number one is memos, that is memorandum. Number two is report writing. Number three is bulletin. Number four is job description. Number five is employee manuals. Number six is email writing. And the last but not the least is instant messages. These are the important types of communication. Okay, ठीक है. So basically, how many type of communications are there, Madhusmita? If the questions may come of 1 marks, then you need to write that there are two types of communication. Two types of communication. Number one is verbal communication. Verbal communication. And number two is non-verbal communication. Non-verbal communication. Third one is written communication. So these are the important types of communication. Are you clear, Madhusmita? Yes, sir. Okay, very good. Let me check your syllabus. I think I have already completed. Just let me check. Please wait. I have already completed business communication, nature and scope, channel and medium of communication, effectiveness of communication, process of communication. Now, last but not the least are the barriers to communication, which is very, very important. And after barriers, completing the barriers of communications, today I'm going to complete unit 1. Okay? Barriers to communication. Barriers to communication. Barriers to communication. Just a minute. Wait, let me check. Barriers to communication. Okay. Now, can you tell me, Madhusmita, what do you exactly mean by the word barrier? You know, what's the meaning of barrier? Obstacles. Any idea? Very good. Barriers means obstacles. तो इसका मतलब क्या होता है, बता पाओगी आप थोड़ा सा इलेबोरेट वे में मुझे बता पाओगी? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन? मीन्स परेशानी. परेशानी या दिक्कत. परेशानी दिक्कत कोई बात, परेशानी ठीक है, दिक्कत वो भी ठीक है. हाँ, ऑब्स्टैकल कह सकते हैं. ऑब्स्टैकल को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी वर्ड. परेशानी तो दूसरी बात हो गया. जैसे नाउ यू आर गेटिंग परेशान ऑफ दिस कम्युनिकेशन बिकॉज ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ऑल. ये परेशानी है. ऑब्स्टैकल का हिंदी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्टैकल हिंदी में, जिसे हम कहते हैं रुकावट? isn't it? हेलो. यस सर. तो रुकावट मीन्स कम्युनिकेशन के बीच में रुकावट आ जाना, दैट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. तो बैरियर्स कैसे होता है? दैट इज एनीथिंग दैट कम्स इन अ वे ऑफ रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज जैसे मैं आपको आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑफ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनी टॉपिक. Now I am thinking, my perception is that I have clearly completed this part, and I think Madhusmita is well known about this content because I had explained her. Now at the back of mind, she is thinking, you are thinking that जो भी सर ने मुझे समझाया है, कुछ कुछ मुझे समझ में आया है, लेकिन मुझे समझ में आया. तो ये समझ में नहीं आया है, कम्युनिकेशन के बीच में यही बैरियर्स क्रिएट करता है. दैट इज वाई यहां पर लिख रहा है एनीथिंग दैट कम्स इन अ वे ऑफ रिसीविंग और अंडरस्टैंडिंग एनी मैसेज. देखो वर्ड को कितना अच्छे से लिखा है राइटर ने यहाँ पर.
anything that comes in the way of receiving and understanding the message. Okay, that one convey the ideas, thought, or any kind of information to anyone else, then it comes under barriers to communication. Barriers of communication का मतलब मुझे सिर्फ समझ में नहीं आ रहा ये बात नहीं है. You are understanding how you are understanding the message, whether the points that I am explaining you, is it clear to you or not. That is also a one important point. Whatever the ideas I am sharing with you, is it clear to you or not. That is also important point. Whatever the thoughts you are having in your mind, whatever the thought process that going on in your mind, क्योंकि सबका रिसेप्टिव स्किल जो होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान अलग अलग होता है. सबका रिसेप्टिव स्किल एक जैसा नहीं होता है. मैं क्या समझा रहा हूं, क्या बोलना चाहता हूं, सामने वाला क्या समझ रहा है, वो क्या समझ के बोल रहा है, एवरीथिंग इज डिफरेंट और एवरीथिंग इज वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. दैट इज वाई बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा. नो, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ इतना ही नहीं. बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप कितना समझ रहे हो और समझ के आप कितना बोल रहे हो. मैं जो भी आइडियाज आपके साथ शेयर कर रहा हूं या आप जो भी आइडियाज मेरे साथ शेयर कर रहे हो, विल इट बी, इज इट ओके फॉर बोथ ऑफ अस, ये भी एक बात है. थॉट प्रोसेस जो है वो भी एक बैरियर्स क्रिएट करता है. मैं क्या समझा रहा हूं, आप क्या समझ रहे हो, या आप क्या बोलना चाहते हो, मैं क्या समझ रहा हूं, ये भी एक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है. सो ऑल दिस प्रोसेसेस falls under barriers to communication. Basically, there are 7 important barriers to communication. Am I clear, Madhusmita? Basically, they are there are 7 barriers to communication. Number 1 is physical barrier. Number 2 is perceptual barrier. Number 3 is emotional barrier. Number 4 is cultural barrier. Number 5 is language barrier. Number 6 is gender barrier. Number 7 is interpersonal barrier. And the last but not the least is, sorry, number 7, sixth one is interpersonal barrier. And the 7th one is break through the barriers. So these are the 7 important barriers are there. Basically, yes, main important है. अगर और डीपली जाओगे तो बहुत सारा और क्रिएट होता है. साइलेंस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बैरियर. एम आई क्लियर मधुस्मिता? साइलेंस जो होता है वो भी एक तरह का बैरियर क्रिएट करता है. इज इट क्लियर? हेलो? सर आप एक दो पॉइंट्स फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ, फिर से कर सकता हूँ. सर मधुस्मिता, एक्चुअली क्या मैं ये नोट पॉइंट्स डाउन तुम कर रही थी. क्या बात कर रही हो? तू नोट डाउन कर रही है? हाँ सर, आप बोल रहे थे तो मैं नोट डाउन कर रही थी बस. अच्छा अच्छा, नहीं मैं तो ये सब नोट्स दे देता. अच्छा ठीक है, रुको एक बार फिर से सर मैं बोलता हूँ. ठीक ठीक ठीक. द 7 लिखो. द 7 barriers टू कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज. लिखो. कभी कभी बीच में यस सर बोल देना, तब मुझे पता चलेगा दैट यू आर एबल टू हियर माय सर वॉइस. आप फोर्थ हाँ, वाले जो कल्चरल बैरियर के बाद से आप रिपीट कीजिए. ओके. पहला क्या बैरियर्स था? फिजिकल बैरियर. ओके. सेकंड परसेप्शुअल बैरियर. थर्ड इमोशनल. मधुस्मिता, कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ परसेप्चुअल बैरियर? PERCEPTUAL. Very good. Excellent. The third one is? Emotional. Absolutely. Fourth Fifth one? cultural. Sorry, fourth one, cultural. Fifth gender. No, 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 no. Fifth is language barrier. Okay, sir. The fifth one is, just a minute, write it down. The fifth one is language barrier. हो जाने से बोल देना. Yes, sir. हो गया. Sixth. Sixth है gender barrier. And sir, seventh. Seventh is interpersonal barrier. Okay, sir. So these are the 7 barriers to communication.
Okay, so do you want me to explain one by one, Madhusmita? Yes, sir. Okay, now comes to the number one is physical barrier. What do you mean by the physical barrier? Physical barrier means in the sense that मैं तुमको कैसे बता, अच्छा ठीक है, मैं एक तुमको डेमोन्स्ट्रेशन क्रिएट बताता हूँ, easily you can understand. Suppose I am taking the offline class in my uh, college. Okay, just understand the situation. Now, every student is concentrating on the particular subject that or particular topic that I am teaching to them. Now, one of the students start creating disturbance without making any sound, but without non-verbal actions. देखो, मैं एक सिचुएशन क्रिएट करके तुमको बता रहा हूँ, तुम उस सिचुएशन को थोड़ा सा फील करो मधुस्मिता, तब तुमको समझ में आ जाएगा। तुम क्लास में बैठी हो, कोई क्लास टीचर पढ़ा रहा है, सब ध्यानपूर्वक क्लास टीचर को सुन रहा है, लेकिन उसमें से कोई लास्ट बेंच के कॉर्नर वाला स्टूडेंट जो है, वो बार बार विदाउट मेकिंग एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट मेकिंग एनी साउंड, वो अपना नॉन वर्बल एक्शन से, अपना फिजिकल नॉन वर्बल एक्शन से वो पूरा होल क्लास को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सिचुएशन पहले तो, हेलो Yes, sir. हेलो, Hello, sir. You're आई एम ऑडिबल ना? तो सिचुएशन को समझ गई? हेलो, आज मधुस्मिता का आज मधुस्मिता का नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मधुस्मिता। आज बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है तुम्हारा। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझ यू आर एबल टू हियर मी ना? जस्ट टाइप अ मैसेज दैट यस सर आई कैन हियर यू। जस्ट टाइप ए मैसेज दैट आई कैन हियर यू सर, तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। यस सर आई कैन हियर यू। ओके, ओके देन, okay, now physical barrier means, the physical barrier means someone sitting in the class without making any sound, with his physical activities he is disturbing the classes, he or she is disturbing the classes. How? Looking here and there, scratching faces, tapping with a pencil, tapping with a pen, playing with a pencil, playing with the copy, playing with the hand, playing with the handkerchief. This all comes under physical barriers. And there is another important example also there. Suppose, for an example, while you are going to sit for an interview, suppose Madhusmita, you are appearing for the interview. एक और सिचुएशन मैं आपको क्रिएट करके बता रहा हूं. Suppose you are appearing for the interview. Suddenly, sir told you that Madhusmita, give your self introduction. Now you started delivering the introduction part of your. Suddenly you saw that ma'am or sir is not paying any attention to you. He or she just playing with the phone, just making a phone call, or just sitting idle, looking here and there, but not concentrating on what you are saying. That also comes under physical barrier to communication. It means the person sitting before you doesn't want to listen you attentively. He or she is not paying any interest on your communication. This also falls under physical communication, physical barrier. Am I clear, Madhusmita? सिर्फ लिख के बता दो yes sir या फिर no sir, कुछ भी हो, बोलने की जरूरत नहीं है. Yes sir. Okay, so this is called physical barrier. Then comes to the next, perceptual barrier. Can you tell me the meanings of perceptual barrier? You know what's the meaning of perceptual barrier?
एनी आइडिया मधुस्मिता? नो, नो सर। ओके, परसेप्चुअल बैरियर्स का मतलब होता है, सपोज I convey a message to you. Simply understand, okay? Very clearly understand. These are the very common things that you will going to get in your examination. Perceptual का मतलब होता है, suppose someone is sharing any ideas, your father, your mother, your brothers, sisters, or your friends sharing some ideas, some point of view with you, but you are not taking or you are not accepting the particular messages very seriously. ओके, सपोज आपके घर में मधुस्मिता आज थोड़ा सा घर में चावल कम बना है, तू आज रोटी खा ले। लेकिन मधुस्मिता, आप क्या कर रहे हो, उस बात को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हो। या फिर घर से कहा जा रहा है कि मधुस्मिता आज तू घर जल्दी आ जाना, आज हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। मैं, तुम और पिताजी तीनों मिलकर शॉपिंग में ले जाएंगे, कुछ खरीदारी करना है। यू नेवर पेइंग एनी अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर मैसेजेस or any particular idea that being sharing with you. Suppose you are working in your wherever you are working, your boss is saying that Madhusmita, please close the sales by today. आज जो भी सेल्स आप ओपन कर रहे हो, आज उसको एक्सक्यूज मी, आज उसको क्लोज करके जाना है तुम्हें 7 बजे या 7:15 बजे। लेकिन आपने अपना बॉस या फिर आपका एचआर, ऐसा आप तो नहीं करते होंगे, बट जस्ट एक सिचुएशन में आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, बट सडनली यू आर नॉट पेइंग, यू आर जस्ट नॉट पेइंग एनी अटेंशन, और यू आर नॉट पेइंग एनी, माने यू आर नॉट इवन लुकिंग टू योर बॉस, योर टू योर एचआर। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं एक सिचुएशन आपको बता रहा हूं। तो ये जो आप आइडियाज, मैसेज, इंस्टेंट मैसेजेस, ये जो थॉट्स, ये जो आपके पास कोई बोलना चाह रहा है, लेकिन आप उसकी बात को उतना सीरियसली नहीं रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसे कहते हैं परसेप्चुअल बैरियर्स। मींस यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द मैसेज, थॉट्स, आइडिया वेरी सीरियसली, यू आर नॉट ग्रांटिंग एनी मैसेज, थॉट, आइडियाज वेरी सीरियसली। दैट इज कॉल्ड परसेप्चुअल मैसेज। इज इट क्लियर? यस सर लिख के बता देना, और अगर नहीं तो फिर मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा। Is it clear, Madhusmita? Is it clear? Yes, sir. Okay. एक और परसेप्चुअल मैसेज का एक परसेप्चुअल बैरियर्स का देयर इज एन अनदर एग्जांपल, और देयर इज अनदर एंगल यू नीड टू अंडरस्टैंड। परसेप्चुअल का मैसेज मीन्स यू आर, सपोज, एक तो ये हो गया कि यू आर नॉट वेरी सीरियस, somebody is trying to conveying his or her message, her idea, her thoughts to you. You are not accepting those messages, thought, and idea very seriously. You are not granting those thoughts, ideas, and messages very seriously. This is one point. Another point is there that you are unable to understand the message, idea, and thought clearly. This also comes under perceptual barriers of communication. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ समझा रहा हूं, कभी बीच बीच में आप बोलते हो नो सर, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा मुझे समझा दीजिए। तो ये फिर कहे, इसे हम परसेप्चुअल बैरियर्स कहते हैं। तो परसेप्चुअल बैरियर्स जो होता है, इट्स ऑफ टू एंगल्स, देयर आर टू एंगल्स इज देयर। वन, you are not accepting someone message, or you are not granting someone message very seriously. Another angle is there, you are not understanding, or you are not trying to understand someone's message. See, accepting, you are not trying to understand somebody's message. That also comes under perceptual barriers to communication. Is it clear, Madhusmita? ओके okay. उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, एक तो हो गया ये, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट, मधुस्मिता कैन यू टेल मी? लो, हेलो, हेलो,
Hello. Yes, sir. You can continue with the next point, emotional barrier. Yes, sir. You are audible. Okay. Emotional barrier in the sense is, uh, again, that I am giving you the situation. Again, I am trying to give you an situation. एक situation मैं create कर रहा हूँ. आप इस चीज को समझिए. Suppose same बात. आप इंटरव्यू के लिए गए हो. सपोज यू बिन टू द इंटरव्यू सेशंस. ये सब एकदम फैक्ट एंड फिगर लेके बता रहा हूं आपको. फैक्ट्स एकदम फैक्ट करंट फैक्ट बता रहा हूं. Suppose you have been appearing for some interview, you have been selected for the job, and your HR is trying to make you a brief that Madhusmita, you have been selected for the post of HR executive, but for Bangalore region. सिचुएशन को समझो पहले, ध्यान से समझो. And now, Madhusmita, you are trying to convey your boss or you are trying to convey your HR that, sir, it is not possible for me right now to shift to Bangalore, as because my financial condition is not good. Not financial condition, my household condition is not good. Maybe my relatives uh, are not in a good health position, is not good. Or you may say that, sir, my parents are not allowing me to go to Bangalore. You are trying to create some emotional excuses in front of your boss. And there the communication breaks down. And there the communication gets stopped. आपका जो बॉस है वो आगे और बात को बढ़ाएंगे ही नहीं. आप उनको इमोशनली बार बार वो बात कर रहे हैं कि सर मेरे लिए उतना बैंगलोर जाना मुश्किल है. एक लड़की बैंगलोर अकेले कैसे जाएगी सर, मेरे लिए प्रॉब्लम है, घर से नहीं मान रहे हैं, मेरे फादर मुझे अलाउ नहीं कर रहे, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, वो नहीं चाहते मैं बैंगलोर जाऊं. तो आप अपने आपका जो अपना इमोशंस है आप उस चीज को अपना एचआर के सामने रख रहे हो. तो एचआर क्या करेंगे, उसी वक्त जो प्रॉपर कम्युनिकेशन का चैनल, फ्लो ऑफ चैनल है, वो ऑब्स्टैकल बंद कर देंगे. कैसे बंद करेंगे? ओके मधुस्मिता, वी विल लेट यू नो. और जैसे ही ये बात बोलेगा वी विल लेट यू नो, इसका मतलब समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन उस कंपनी के लिए, उस जॉब प्रोफाइल के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है. यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट. क्यों? कम्युनिकेशन वहीं स्टॉप हो गया है. दिस इज कॉल्ड इमोशनल बैरियर टू कम्युनिकेशन. एक और सिचुएशन मैं क्रिएट करके देता हूं, बता के देखा. सपोज बीइंग यू आर इन योर ऑफिस, यू आर बिन, आपको टारगेट दिया जाता है. डेफिनेटली यू आर गेटिंग सम टारगेट, दैट इतने टारगेट्स आपको दिया जाता है. इट्स अ टारगेट बेस्ड जॉब वेयर यू आर वर्किंग. डेफिनेटली टारगेट तो है. सेल्स एग्जीक्यूटिव मीन्स यू हैव अ टारगेट. Okay, now suppose you unable to fulfill the target on a given time. You fail to meet up the target on a given time. Now your boss started you scolding. Your boss started want an explanation from Madhusmita that why the sales is falls down. What is the reason that you have not covered this sales during this tenure? Then you started your emotional story. You started to create some emotional story in front of your boss or in front of your HR, trying to convey that these are the situations that occurs before me, and that for that reason I am unable to meet up the sales target. This is also a emotional barrier to communication. Is it clear, Madhusmita? Is it clear? Is it clear? It is clear. Okay, thank you. Today I am audible, na? Completely. Today I am audible, na? Okay, thank you. But you are not audible today. I don't know why. Maybe because of some other reason. Achha, what is the next after emotional barrier? What is the next barrier? Can you tell me? Just write it down. The next one is cultural barrier. This is also very important. Cultural barrier. So cultural barrier, I am going to say now. This is suppose
how can I explain you this thing? It's something awkward. You don't feel. Please don't feel awkward, Madhusmita. Cultural barrier I'm going to explain right now, but please don't feel awkward of this. Okay, cultural barrier in the sense. Suppose your working areas, the where you are working, or suppose you are traveling to any particular place. Okay, suppose you are traveling to any particular place. Now you got a reservation in upper berth. मैं एक सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा हूं. You got an reservations in upper berth. Okay. Now suddenly you saw. Okay. No, no, no. Suddenly you saw there a man or a man or any person or your co-passenger is of other cultural background. Now you feel really very uncomfortable to travel journey with your co-passenger. Now you're trying your level best to convince your TT that, sir, please change this seat. I don't want to continue my journey with this co-passenger, as because he or she is from different cultural backgrounds. ऐसा होता है मधुस्मिता. इट्स नॉट अ जोक. मैंने ये अपने आंखों से खुद से देखा है. मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मैं बोल देता हूँ. एज आई वॉज ट्रेवलिंग टू वेयर आई कैन से आई वॉज ट्रेवलिंग टू बिलासपुर. मेरा कुछ कॉन्फ्रेंस था बिलासपुर में, तो मैं ऐसे जा रहा था बिलासपुर में. आई हैव रिजर्वेशन इन स्लीपर क्लास. एसी मुझे नहीं मिला था, स्लीपर क्लास में मुझे मिला था. टाटानगर से ही वो ट्रेन छूटती है सुबह 9 साढ़े 9 बजे, और शाम तक मतलब उसका राइट टाइम शाम को 6:30 बजे वो पहुंचा देती है. तो मैं स्लीपर क्लास में ट्रेवल कर रहा था. एक मारवाड़ी पैसेंजर्स फैमिली ट्रेवल कर रहे थे हमारे साथ. मारवाड़ी पैसेंजर्स 4 और 5 ग्रुप्स ऑफ पर्सन आर देयर, जिसमें एक ओल्ड लेडी थी वहां पर, और कुछ किड्स भी थे, और भी कुछ एल्डर्स थे वहां पर. तो सडनली आफ्टर क्रॉसिंग राउरकेला a passengers from Raulkela, Muslim passengers board the train. He came down. He started to having his lunch, and he is having some chickens or something else. He had some chicken stuff and meat. He is eating over there, and the persons sitting opposite to me, the especially Agarwal family, the Marwari family, uh, they are vegetarian family. So suddenly the Agarwal family started screaming, ये कैसा है यार, जहां देखते हो आप लोग अपना ऐसा ये करके नॉनवेज खा रहे हो, देख नहीं रहे हो हम लोग ब्राह्मण की फैमिली के हैं, ये है वो है, आप ऐसा नहीं कर सकते. छोटी सी बात, इतनी बात में इतना बड़ा मतलब वो आकार, विराट रूप आकार ले लिया कि सडनली पुलिस को, तो पुलिस तो ट्रैवल करती रहती है, पुलिस को और फिर और दूसरे पैसेंजर्स को भी वहां पर आना पड़ा, और दोनों का सीट चेंज करवाना पड़ा. ये सबसे बड़ा कल्चरल बैकग्राउंड का, कल्चरल कम्युनिकेशंस का एग्जांपल्स मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं. दोनों का सीट चेंज करना पड़ा. एंड द लेडी फ्रॉम दैट अग्रवाल फैमिली इज सो डेंजरस. आई यूज द वर्ड डेंजरस, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज मधुस्मिता. उसने टीटी को रेकमेंड किया, सर प्लीज चेंज दिस बोगी, आई वांट माय रिजर्वेशन इन द नेक्स्ट कंपार्टमेंट. सॉरी, नॉट बोगी, आई वांट माय रिजर्वेशन इन द नेक्स्ट कंपार्टमेंट. S5 या S6 ऐसा कुछ था. आज से 1 साल पहले 2022 में ये इंसिडेंट हुआ था. तो वो पूरा अभी तक वो तरोताजा है मेरे मेमोरीज में. और मैं ये एग्जाम्पल हर समय वो चीज देता हूं कि देखो आज भी कल्चरल डिफरेंसेस कितना है, ये सब चीज कितना माना जाता है. देखो मुझे भी खराब लगा कि वो मुस्लिम का कोई भी उसमें फॉल्ट नहीं था. वो अपना टिफिन लिखा के लंच कर रहा था. आपको दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा उठ जाइए, बाद में खाइए. लेकिन नहीं, वो सडनली स्क्रीम, दे स्टार्टेड, एवरी वन ऑफ द फैमिली स्टार्टेड स्क्रीमिंग, शाउटिंग एट दैट पर्टिकुलर पर्सन, आप ऐसा कैसे यहाँ पर मीट मछली खा रहे हो, देख नहीं ले रहे हम लोग शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण फैमिली है. अब यार एक मुस्लिम को कैसा पता चलेगा कि आप ब्राह्मण हो? आप बताए हो क्या मैं अग्रवाल हूँ, ये हूँ? बाद में तो मुझे पता चला कि ये अग्रवाल है, जब नाम पढ़ रहा है
कि आपका ये नाम है सुमित अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, ऐसा कुछ नाम पढ़ा, तब मुझे मालूम चला कि ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है, वेजिटेरियन से। तो ऐसा कभी कैसा स्कूल कर सकते हो? वो कोई इब्राहिम इब्दुल्ला ना कुछ ऐसा कुछ नाम था। इतना वो आगे बढ़ गया, कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया, कल्चरल डिफरेंस की वजह से कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया कि सडनली दे नाउ ट्राइंग, वो दोनों कंपार्टमेंट चेंज कर दिया। वो चला गया S2 में, इनको भेज दिया गया S4 में, वो सीट खाली करना पड़ा, वहां बैठने ही नहीं दिया। दूसरे पैसेंजर आके फिर वो गए, सिर्फ और सिर्फ वो मीट और चावल या फिर मीट और चपाती खा रहे थे, उनको पसंद नहीं आया। दिस इज कल्चरल कम्युनिकेशन बैकग्राउंड। ये तो मैंने एक बहुत बड़ा सिचुएशन दिया है। आप अपने ऑफिस में अपना ऑफिस में भी ऐसा कुछ देखिएगा, जो स्पेशली जो दूसरे कम्युनिटीज के होते हैं, उनका अगर कोई कम्युनिटीज सेम कम्युनिटी बिलोंग करके उस ऑफिस में काम कर रहा है, सपोज द पर्सन बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी वर्किंग ओवर देयर, तो प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस बीन गिवन मोर टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये चीज आप ऑब्जर्व कीजिएगा, दिस अ फैक्ट मधुस्मिता, आई एम टेलिंग यू। उस पर्टिकुलर कम्युनिटीज में, कम्युनिटी की कोई भी इंसान अगर हाई रैंक्स में काम करते होंगे, तो उस जूनियर जो कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के अपने लोग जो होते हैं, जो जूनियर है, उनको प्रायोरिटीज प्रेफरेंसेस ज्यादा दिया जाता है। अब मैं किस चीज को बता रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, आप समझ जाइए। स्पेशली even to the even I have observed this thing in my classrooms also. Lot of Muslim candidates are there and lot of Muslim faculties are also there. Okay, but they are creating a barrier to the communications by this cultural differences. They are giving the special treatments to the title who are having Abdullah, Mandal, or Hamid, Ahmed. The Muslim faculty members giving the priorities to those candidates who belong to this titles and all. And on the same time, on the same class, those faculties trying to betray or trying to miscommunicate with those candidates who are belong to the other cultural। ये मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुमको समझाने के लिए कल्चरल बैरियर्स क्या होता है, मैंने तुमको एक एग्जाम्पल्स तुमको यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। Is it clear? Is it okay? Understand what is the difference, what is the meaning of cultural barrier in communication? ये बहुत बड़ा important part होता है background barriers to the communications में। Am I clear, Madhusmita? Is it clear to you? Yes sir, understood. Okay. Next क्या है? Can you tell me, Madhusmita, what is the next? Language is also a big part of communications. That is also a barrier to the communication. Suppose you couldn't understand Hindi very well. I am giving an example, Madhusmita. You a lot of students are there who doesn't understand Hindi very well, who doesn't understand English very well. For an example, suppose if I started giving you lecture on German language or French language or any other language apart from Hindi and English, will it be possible for you to understand the particular type of language or particular communication that I'm communicating with you? No, never. It will not going to be possible for you to understand apart from Hindi and English. That is language barrier to the communications. Okay, language is also very important part of communication. Suppose if you ever been to your Tamil Nadu's Kerala, if you visit to the Kerala, and you nowadays a lot of Hindu people are there, but before that, if you go to any interior villages of Kerala, you visit there, you start talking with your own mother tongue. They hardly could able to understand. They will simply say, sir, either speak in Tamil or other rather in English. They will never going to understand your Hindi language. Okay, so this is one of the biggest problem or this biggest issue in our India. That is why now our sarkar, our government is trying to have this Hindi language, this regional Hindi language. He wants to make it nationalized. Government want to make this language, Hindi language, a national language. Okay, why? Because of this problem. And especially south part, they prefer their native language. For example, my customer who don't know English or Hindi, miscommunication happen. Yes, absolutely, Madhusmita. Now you understand this point. Very good. Yes.
आप एग्जाम में इस तरह का पॉइंट्स अगर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा ना, आप डेफिनेटली लिख पाओगे मधुस्मिता। आई हैव द परसेप्शन इन माई माइंड। वेरी गुड मधुस्मिता, यस। ये आप सबसे अच्छा, मेरे से भी अच्छा आप जानोगे, क्योंकि यू आर हैंडलिंग लॉट ऑफ कस्टमर, कल्चरल डिफरेंसेस कस्टमर, लैंग्वेज डिफरेंसेस कस्टमर्स आर देयर। आप कोई आदिवासी जो एकदम इंटीरियर विलेज, जिसको हिंदी भी उतना अच्छा बोलने नहीं आता है, आप अगर उसको इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे, देयर विल बी अ कल्चरल डिफरेंसेस डेफिनेटली। Sorry, language differences, language. So language is also creating a barrier to the communication. Understand Madhusmita? Yes sir. अच्छा मधुस्मिता, आज थोड़ा सा क्लास अभी यहाँ ऑफ कर दूं? देखो मेरा बगल में फिर मतलब वो माइक बजा के पूजा उजा हो रहा है। देखो तुमको सुनाई दे रहा है लगभग। आई थिंक यू एबल टू हियर द वॉइस, बहुत डिस्टर्ब